छी हमारी जनकपुर ई सीता के जनकपुर जनक के गाँव जनकपुर हम छी हमर जनकपुर। कुन बुक पढ्न मन रुचाउँछ तपाईलाई? ABCD। संपन्न गोटे के टीवी टुडे में स्वागत करी छी। हम चाहनी अखन हम सब पहुँच चुकल छी वकील महला में, वकील टोल में जे असर विद्या मंदिर है स्कूल तैके आई 11 साल हमरा बुझाई लगभग स्कूल के भऽ चुकल है। स्कूल में हम सब आबि चुकल छी। एहिठाम केहन गतिविधि सब छै सेहो चीज हम सब वाच करबनि। खास कऽ कऽ हमरा सबके एबाक एहिठाम जे एहिठाम अहाँके ओपन हाउस मेला कहिके जे छै से लगाओल गेल छै बच्चा सबके एक्टिविटीज बढ़ेबाक लेल। जे अखन स्कूल सबमे देख रहल छी निरंतर जे बच्चा सबके डांस सिखायल जाइ छै, कतेक बच्चा सबके अखन खेल क्षेत्र में जेनाकि गेम में क्रिकेट प्रति कतेक बच्चा के अखन आकर्षण अहाँके भऽ चुकल छै, खेल प्रति रुचि छै। तऽ खेले में तऽ जै बच्चा के जै प्रति हुनका सबके रुचि छनि ओहि प्रति जे छै से अखन स्कूल सब विशेष चासो दै छै। जेना कतेक बच्चा के पेंटिंगे करऽ में जे छै से नीक लगै छै तो पेंटिंगे तरफ बच्चा के सिखाओल जाइ छै। जेकरा जिनका जे इच्छा रहै छै वएह चीज जे छै से अखन विद्यार्थी सबके प्रोत्साहन केलक स्कूल के तरफ से। देख सकै छी हमरा स्कूल जे पाछा में छै अक्षर विद्या मंदिर के ई बैनर लगाओल गेल छै। अखन हम सब अक्षर विद्या मंदिर के भीतर में जाकर एहिठाम विद्यार्थी सब की अपन स्टॉल सब लगेने छथिन, अपना हाथ से जे कला की सब छथिन बनेने तैमे हम सब बच्चा सबके देखब। एहिठाम खास कऽ कऽ एकटा चीज की चीज नया छै, बच्चा सबके ड्रोन उड़ेबाक सेहो जे छै से सिखाओल जेतै। 7-8 टा एहन जे छै से अहाँके एहिठाम जे झलको अहाँके छै बच्चा सबके जे आइ हिनका सबके सिखाओल जा रहल छै। तऽ खास विशेष आइ के मेला के करेबाक ई अहाँके की उद्देश्य छै हिनका सबके एहि कार्यक्रम की? कियाक तऽ हुनका सबके सब दिन क्लास में होते रहै छथिन गतिविधि, लेकिन ई कार्यक्रम करेबाक मेन उद्देश्य की अछि? तऽ हम सब स्कूल के पदाधिकारी व्यक्ति सब बातचीत करब, किछु पेरेंट्स सब सेहो आयल छथिन आ विशेष बातचीत हम सब विद्यार्थी से करब। कहै छै विद्यार्थी के बात लेनाइ जरूरी रहै छै कि हुनका की में इंटरेस्ट छै, कियाक तऽ भविष्य छै। अखन शिक्षा क्षेत्र के हब के रूप में मानल जाए तऽ अखन ई जनकपुर धाम भऽ चुकल अछि, कियाक तऽ मध्य प्रदेश की राजधानी जनकपुर अछि। एहिसँ पहिनहु ई शिक्षा क्षेत्र के हब छल, अखन जे छै से फेर से ई हब होबत जा रहल अछि, ओना छेबेटा करे। एहिठाम देख रहल छी प्राइवेट स्कूल सब अखन निरंतर जे छै से ध्यान दऽ रहल छै बच्चा सबके प्रति, जाहिमे जिनका इच्छा हो ओहि प्रति जे हुनका सबके आकर्षण कऽ रहल छथिन। तऽ विशेष बातचीत हम सब एहिठाम स्कूल में जाकर देखब और करब। सबके बीच में एक विद्यार्थी जुड़ गए छथि। की नाम छ बाबू को? मेरो नाम आहिल खान छु। कति में पढिरहेको? म कक्षा 6 में जान्छु अहिले। यस्ता कार्यक्रमले के तपाईले सबैभन्दा यो कार्यक्रममा के राम्रो लाग्यो? मलाई राम्रो लाग्छ कि तबला हजुर बजाउनलाई। तपाईको स्कुलमा सबैभन्दा मन पराउने कुरा के छ? हजुर तपाईको स्कुलमा सबैभन्दा मन पराउने कुरा के छ तपाईको लागि? मेरो स्कुलमा सबैभन्दा मन पराउने कुरा छ कि हाम्रो स्कुलमा धेरै इन्स्ट्रुमेन्टहरू राखेको छन्, जस्तै फ्लुट, हार्मोनियम, कीबोर्ड र पियानो र तबला छ। के तपाई आज चाहिँ केमा भाग लिनु भएको छ? के गरिराख्नु भएको छ तपाई? हजुर तपाई आज के गरिराख्नु भएको छ यस कार्यक्रममा? म आज तबला बजाइरहेको छु। तबला बजाउन तपाईले रुचाउँछ? हजुर तबला बजाउन रुचाउँछ, मन पर्छ? हजुर मन पर्छ मलाई। ओके, तपाईको सबैभन्दा मन पर्ने सब्जेक्ट कुन रहेछ? मेरो सबैभन्दा मन पर्ने सब्जेक्ट साइन्स छ। साइन्स। ओके, तबला तपाई कसरी तपाईले रुचि बढ्यो तबलातिर? किनकि मलाई त्यसको साउन्ड मन पर्छ, त्यही भएर तपाई बजाउन सुरु गर्नु भएको छ। आज तपाई आफ्नो यो के भन्छ यो तबला बजाएर नै यो कार्यक्रममा भाग लिनु भएका छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हम सब बउआ से बातचीत केनौ जे एठाम हुनका
तबला बजाबऽ में नीक लगै छै, तबला के साउंड नीक लगै छै, ओहि दुआरे तबला बजाबऽ के सीखने छै आ ओहि में एहि कार्यक्रम में से तबले बजाबऽ के लेल भाग लेल गेल छै। तहिना हमरा बीच में एकटा बौआ विद्यार्थी अक्षर विद्या मंदिर के जुड़ि गेल छथि। के नाम छ बाबूको? आर्क्स कतिमा पढिराख्नु भएको? नर्सरी नर्सरीमा। के सबैभन्दा कुन विषय मन पर्छ? कुन बुक पढ्न मन रुचाउँछ तपाईलाई? एबीसीडी एबीसीडी सुनाउनु त। एबीसीडी कसरी तपाईँ पढ्नुहुन्छ? कसरी म्याम हाम्रो पढाइदिनुहुन्छ? एबीसीडी EFGHIJKLMNOPQRSTUV XYZ। गीत सिकाउँछ? गीत गाउन आउँछ? आउँदैन। अनि के गर्न मन पर्छ तपाईलाई सबैभन्दा? खेल्नु खेल्न मन पर्छ। कुन खेल सबैभन्दा गेम मन पर्छ यहाँलाई? झोला। ओके। अनि सबैभन्दा कुन म्याम मन पर्छ तपाईँको क्लासमा? मिस प्रीता। ओके। अनि कस्तो लागिरहेछ अहिले कार्यक्रममा? अच्छा राम्रो लागिरहेछ? ल धेरै धेरै धन्यवाद। तहिना अखन हम देखाबऽ जा रहल छी अपने सबके, जे देख सकै छी जे एतेक छोटका ड्रोन हम सब उड़ैत तऽ देखैत रहै छी। हरेक चीजमे अखन जे छै से जति अहाँके वीडियो सब जे पैघ पैघ अहाँके लेल गेल जाइ छै, ओ अहाँके जे छै से ड्रोन के मार्फत से पिक्चर घिचल जाइ छै। हरेक ठाउँमे अखन ड्रोन चाहबे टा करी, अथवा कोनो छोट छोट कार्यक्रम किया नहीं होय, विवाह सब किया नहीं होय, तो सबमे ड्रोन के आवश्यकता पर्छ। आ खास करके ई की छै तऽ हमसब विशेष एहिठाम जे छथिन इंजीनियर हुनका संगे बातचीत करब। यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम रजनेश श्रेष्ठ। के हो यो? यो चाहिँ हामीले एउटा 3D प्रिन्टरको एउटा डेमोन्स्ट्रेसन गरिरहेछौँ। 3D प्रिन्टर भनेको चाहिँ जेनरली हामी बुक्सहरूमा चाहिँ 2 डाइमेन्सन देख्थ्यौँ मात्रै, तर त्यो चाहिँ रियलमा कसरी अब्जेक्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो 3D प्रिन्टरले गराउँछ। अनि आफूलाई डिजायर भएको, आफूलाई चाहेको कुरा चाहिँ हामीले डिजाइन गर्न सकिन्छ। त्यो डिजाइनलाई चाहिँ रियलमा फिजिकल हामीले छुएर हेर्न सक्ने एक्सपिरियन्स कसरी लिन सकिन्छ त्यो चाहिँ हामी प्रिन्ट गर्छौँ। यसले गर्दा त्यो बालबालिका जुन यसमा पढिरहेको छ बच्चाहरू, त्यसलाई कसरी तपाईँहरू यसमा चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन सक्नुहुन्छ? कसरी उहाँहरूलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ? अनुभव कसरी उहाँहरूले दिन सक्नुहुन्छ? हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई दुईवटा कुरा सिकाउन खोजेको हो। एउटा चाहिँ डिजाइन कसरी गर्ने, 3 डाइमेन्सनल अब्जेक्टलाई चाहिँ 2 डाइमेन्सनल हेरेर कसरी डिजाइन गर्ने, र त्यो 2 डाइमेन्सनमा हेरेर डिजाइन गरेको कुरालाई 3Dमा चाहिँ कसरी उतार्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउन खोजिराखेको हो। अनि योबाट चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एउटा डिजाइन कसरी गर्ने, अनि कम्प्लेक्स स्ट्रक्चरहरू कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा सिक्छन्। र त्यही सिकेको कुरालाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट मोटर युज गरेर, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ यो हिटिङ मेकानिजमहरू युज गरेर चाहिँ कसरी रियल लाइफमा काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउँछौँ। हस्, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? एकदमै खुसी छौँ हामीलाई अक्षर स्कुलले चाहिँ यहाँ बोलाइदिनु भयो, र स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अब यो हुने मोडर्न एजमा हुने एजुकेसन प्रोभाइड गर्नको लागि चाहिँ मोडर्न यो समयमा चाहिँ कस्तो कस्तो टेक्नोलोजीहरू युज भइरहेछ त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ डेमोन्स्ट्रेट गर्न पाएको छौँ, र स्टुडेन्टहरूलाई केही इन्स्पायर गर्न पाएको छ। त्यसमा हामी खुसी छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। तैना हाम्रा बीचमै प्रादेशिक अस्पताल के निर्देशक जी छथिन जामुन डॉक्टर जामुन सिंह जी, उनका संगे बातचीत करबेन जे अखन ई अक्षर विद्या मंदिर स्कूल में जे ओपन हाउस मेला लागल छै, हुनकर केहन धारणा छै एहि मेला के प्रति, की कह चाहै छथिन। एकटा पेरेंट्स सेहो छथिन, एहिमे हुनकर बच्चा जे छै से अहाँके पठन पाठन सेहो कऽ रहल छथिन। अपने के स्वागत छै डॉक्टर। धन्यवाद। ई ओपन हाउस चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के एकटा अंग है। विद्यार्थी सबके जे बाल बालिका सब रहै छै ओकरा चौतरफी विकास के लेल खाली एकटा किताबी ज्ञान के मात्रे नहीं रहै छै, कैलाकि मानव जीवन में बहुत किस्म के समस्या सब अबै छै, हार होइ छै, जीत होइ छै। हार के स्वीकार करके ओकरो जश्न मनायल जाइ छै, जीत के स्वीकार करके ओकरो जश्न मनायल जाइ छै। तो तही अंतर्गत ई सब अबै छै। हम सब गेम खेलै छियै, बहुत किस्म के गेम रहै छै। गेम जे होइ छै से ओहिमे हार होइ छै, हरेक दिन एक किस्म के हार होइ छै। तो वो हार स्वीकार करके एकटा क्षमता विद्यार्थी में अबै छै। तो वैसे विद्यार्थी सब भविष्य में जाकर अगर कोनो ओकरा पीड़ा होइ छै तो तुरंत कोनो किस्म के रिएक्ट न करै छै, ओकरा बर्दाश्त केला, आगाड़ी बढ़े के लेल फेर अपन एकटा ग्राउंड तैयारी केला। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तो एकटा ब्रेन के अपना सब की छै, ह्यूमन ब्रेन हजारों हजार सेंटर से भरल है। वही में एजुकेशन तो एकटा सेंटर भेलै न, वही के अलावा सोशलिज्म, सामाजिक प्राणी बननाइ, सेवा केनाइ, सम्मान बनौनाइ, सम्मान दर्शौनाइ, तकर बाद में सभ्यता के विकास होइ छै,
तकर बाद डिफरेंट किस्म के स्किल सब होइ छै जे स्किल बच्चा सब अपना आप में लबै छै तो ओइसे की होइ छै एकटा आत्म शांति भी होइ छै आ ब्रेन के चौतरफी विकास होइ छै तो ई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के जब महत्वपूर्ण अंग है तो ओइसे बच्चा सबके वास्तव में फायदा होइ छै आ गार्जियन सबके लेल भी एकटा ई बड़का मौका है कैलाकि एते व्यस्त जीवन है ना कि सब कोई काम ड्यूटी वही प्रति डेडिकेशन भेल जाए है आ एहि के चक्कर में परिवार छूट जाए छै तो बाल बालिका सब जरे जरे अपना पहुँचबे नहीं जगह पर अखन देखियो एते एडवांस भेला के बाद में यूरोप में बिना माय बाप के बच्चा स्कूल में लेबे नहीं करे सब यानी डेली माइए बाप पुगावा जाए ओकरा घर के अपने आदमी आवे पड़े छै आ एकटा अपना सबके जे बस में दऽ दै छियै फिर देखै नहीं छियै तो कम से कम ई मौका एकटा मिले है कि बौआ जरे अपना स्कूल जइयो वातावरण देखियो टीचर सबसे मुलाकात करियो औरो दोसर बच्चा सबके प्रतिभा केहन है से देखियो यानी शेयर के एक शेयर करे के कल्चर जो है स्किल शेयर सेहो सब देखा के मौका मिले छै तो दुनू के लेल गार्जियन के लेल भी बच्चा के लेल भी ये एक चौतरफी विकास के हमरा एक उदाहरण बुझाइए। बहुत बहुत धन्यवाद देवा चाहबन वास्तव में जे एकटा डॉक्टर के हिसाब से बच्चा सब जतेक इस चीज में इन्वॉल्व रहते तो ओतेक अहाँ के बेटर रहते और निक रहते इनका धन्यवाद देवा चाहबन तैना हम सब एठाम और अपने ठाम के दृश्य देखाब और आदमी सब बातचीत करब तैना हमरा बीच में असर विद्या मंदिर के कार्यकारिणी निर्देशक प्रकाश केजरीवाल जी छथिन हुनका हमसे स्वागत करबन तब विशेष बातचीत करब यहाँलाई स्वागत। नमस्कार। सर्वप्रथम यो तपाईँ जुन यति टाइमदेखि गरिराख्नु भएको छ असर विद्या मन्दिरमा यो कार्यक्रमहरूले गर्दा कतिको चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ प्रोत्साहित भएका छन्। अक्षर विद्या मंदिर को स्थापना 11 साल पहिला भएको थियो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अक्षर विद्या मंदिर वाज टू ब्रिंग स्मार्ट एडुकेशन एट जनकपुर धाम नेपाल। हामी जनकपुरमा 11 साल पहिले आउँदाखेरि स्मार्ट बोर्ड लिएर आए प्रत्येक क्लासमा स्मार्ट बोर्ड इन्ट्रोड्युस गराएको थिएँ र त्यहाँबाट टेक्नोलोजी इनेबल्ड एडुकेसनको जुन हामी कुरा गरिरहेछौँ अहिले त्यो कुरा जनकपुरमा अक्षर विद्या मन्दिरबाट नै सुरु भएको थियो र अहिले आज हामी यो जुन गरिरहेछौँ त्यसमा तपाईँले हेर्नुभएको होला 3D प्रिन्टिङ छ। जस्तो यो इक्जाम्पल लिनुहोस् एउटा यो 3D प्रिन्टिङ भएको 3D प्रिन्टिङ देखाउने अरू रोबोट अहिले रोबो सोकर छ बाहिर तपाईँको ड्रोन सो छ ठिक छ पिपल आर लाइक सिइङ द स्टुडेन्ट्सको काम गरेको यो सबै देखाउने एउटा मात्रै पर्पस के छ भने करियर को कुरा गर्दाखेरि करियर डिफ्रेन्ट स्ट्रिममा छ। स्टुडेन्ट हेज टु बी स्किल्ड टु एक्वायर द्याट जब। आज हजुर जर्नलिजममा हुनुहुन्छ जर्नलिजम पनि आजदेखि 15 साल पहिला एउटा राम्रो करियरको रूपमा चिनिन्थेन बट आज एउटा यसको अर्को पहिचान छ। स्टुडेन्टले के बुझ्नु पर्यो भने इन्जिनियरिङ मेडिकल बाहेक पनि थुप्रै स्कोप छ। कम्प्युटरमा आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको नयाँ रूप लिइसकेको छ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सले। दे आर सो मेनी अपर्च्युनिटिज एन्ड दे सुड एक्सप्लोर एज पर देयर स्ट्रेन्थ के। सर जसरी अहिले के हेरिरहेको छु भने धेरै जसो स्कुलमा अब चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यो कार्यक्रमहरू जस्तै आज तपाईँ ओपन हाउस गरेर चाहिँ यो कार्यक्रम राख्नु भएको छ होइन योभन्दा पहिला पनि तपाईँले विगतमा राखिसक्नु भएको छ। यो वर्ष चाहिँ के नयाँ गर्नु चाहिँ विद्यार्थीहरू लगाउनु भएको छ के चाहिँ उहाँहरूले वर्क दिनुभएको थियो होइन। जस्तो यो चोटिदेखि हामी के गरिरहेछौँ भने हाम्रो करिकुलममा आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको टिचिङ हामी इन्क्रिज गर्न गइरहेछौँ। यो सालदेखि हामी ग्रेड 11th पनि इन्ट्रोड्युस गर्दैछौँ। कम्प्युटर साइन्स एआई फोकस कम्प्युटर साइन्स पनि हामी सुरु गरिरहेछौँ र सानो बच्चाहरूको लागि क्लास 4 देखि हाम्रो प्लान के छ भने कसरी थोरै थोरै एआईको पनि कसरी सिकाउन सक्छौँ हामी त्यसमा हामी प्रयास गर्दैछौँ। एन्ड अनदर इम्पोर्टेन्ट थिङ इज वी आर प्लानिङ टु इन्ट्रोड्युस STEM एडुकेसन फर आवर स्टुडेन्ट्स। यो कार्यक्रम यो म्याडमहरू त मिसहरू त्यो सिकाइरहेका हुन्छ क्लासमा पनि सिकाइरहेका हुन्छन् तर यो कार्यक्रम गर्ने उद्देश्य किन त्यो गराउने चाहिँ तपाईँहरू सोच राख्नुहुन्छ यो गराउने आवश्यक छ किन जरुरी लाग्यो तपाईँलाई यस्ता कार्यक्रम? सिइङ इज बिलिभिङ। मान्छेले हेरेपछि उसमा विश्वास जाग्छ। हेरेपछि आज हामी 3D प्रिन्टरको कुरा गर्दाखेरि 3D प्रिन्टरको अहिले भर्खर उहाँले स्पाइडर प्रिन्ट गर्नुभयो। प्यारेन्ट्सहरू त्यो हेरेर कतिको उत्साहित हुनुभएको छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिला हामी सुनेको थियौँ कि 3D प्रिन्टरले 3D प्रिन्ट गर्छ। सो त्यो हेरेपछि एउटा अर्कै विश्वास आउँछ अर्को एउटा सिक्ने भावना जाग्छ। त्यही कारण इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु सी द थिङ्स इन रियल लाइफ के एक्जिबिट त्यही कारण इम्पोर्टेन्ट छ। कतिको चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो रुचाइरहेका छन् यो बालबालिकाहरू सानो सानो बच्चाहरू अहिले हेरिरहेको छु एकदमै यो कार्टुनमा पनि यो सामग्रीहरू बनाएर ल्याएको छ होइन। कति चाहिँ उहाँहरू प्रोत्साहित हुनुहुन्छ यस्ता कार्यक्रम तपाईँ गराउनुहुन्छ भने विद्यार्थीबाट कस्तो एक्साइटेड रोबो सोकरबाट दे आर एक्साइटेड। उहाँहरूको लागि फर्स्ट टाइम इन जनकपुर हामीले रोबोटबाट सोकरको लागेको
त्यही दे आर एक्साइटेड ड्रोन सो भर्खर भयो ड्रोन सोबाट दे वेयर एक्साइटेड टु सी द स्टन्ट सोन बाई द ड्रोन सो बच्चाहरूमा इन्ट्रेस्ट देखिरहेको छौँ ठिक छ स्नेक लेडर हामीले बचपनमा खेलेको हो आज ठुलोमा पनि हेर्दाखेरि बच्चाहरू त्यहाँ सो दे आर इन्जोइङ वाट आई फिल कि एडुकेसनमा नयाँ टेक्नोलोजी कहाँ पुगिसकेको छ त्यो बुझ्नको लागि त्यसलाई हेर्न जरुरी छ पहिला अब मैले के भन्न खोजेँ सर जसरी अहिले चाहिँ सबै प्यारेन्ट्सको इच्छा हुन्छ हरेक वर्गको इच्छा हुन्छ कि मेरो चाहिँ बच्चा मैले पढेको छैन मेरो बच्चा चाहिँ कम्तीमा राम्रो पठन पाठन गरोस् राम्रो लुगा लगाउन सकोस् राम्रो स्कुलमा पठन पाठन गर्न चाहिरहेका हुन्छन् तर कतिपय आर्थिक अवस्थाका कारण चाहिँ मान्छे चाहिँ पढ्न पाइरहेको छैनन् सब कतिको इच्छा होला कि म यो अक्षर विद्या मन्दिरमा पढ्न चाहिरहेको छु तर आर्थिक अभावका कारणले गर्दा चाहिँ उहाँहरू यस्ता गतिविधिहरूबाट वञ्चित भएका छन् यस्ता यस्ता कार्यक्रम उसमा कला पनि छ तर चाहिँ त्यो उहाँहरूसँग आर्थिक अवस्था खराब छ प्यारेन्ट्सहरूसँग त्यसले चाहिँ नाम एडमिसन गराउन सकिरहेका छैनन् यस्ता यस्ता स्कुलहरूमा त्यस्ता बच्चाहरूको लागि केही सुलभ केही यता चाहिँ केही त्यस्तो छ कि होइन हामी वी अन्डरस्ट्यान्ड आवर रेस्पोन्सिबिलिटी कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी हामी बुझिन्छौँ र त्यस्तो गार्जियनहरूलाई त मेरो रिक्वेस्ट के छ भने हामी छात्रवृत्तिबाट थुप्रै गार्जियनहरू लाभान्वित भइराख्नु भएको छ र जसलाई लाग्छ यस आई निड सपोर्ट त्यस्तो छ भने हामी छात्रवृत्ति कार्यक्रम पनि प्लान गर्दैछौँ जानकी छात्रवृत्ति हाम्रो योजनामा छ चाँडै त्यो एनाउन्स हुन्छ जहाँ जानकी छात्रवृत्तिमा गर्ल्स स्टुडेन्टहरूको लागि हामीले 100% निःशुल्क प्लान गर्दैछौँ त्यो जहिलेसम्म हाम्रो समाजको महिला अगाडि आउँदैन हाम्रो बहिनीहरू अगाडि आउँदैन त्यो बेलासम्म समाज अगाडि बढ्दैन त्यही कारण हाम्रो जानकी छात्रवृत्तिको हाम्रो प्लान छ हामी यो सेसनमा इन्ट्रोड्युस गर्ने प्लान गर्दैछौँ के भन्न चाहिराख्नु भएको छ तपाईँ यो स्कुलको तर्फबाट होइन मेरो सबै प्यारेन्ट्सहरूसँग एउटा मात्रै रिक्वेस्ट के छ भने प्रत्येक साल बच्चाहरूको स्कुल चेन्ज नगर्नुहोस् इट्स भेरी डिफिकल्ट जनकपुरमा एउटा ट्रेन्ड देखेको मैले दे चेन्ज स्कुल एभ्री इयर त्यो चेन्ज नगर्नुहोस् बच्चाको मानसिक स्थितिमा राम्रो असर पर्दैन अर्को कुरा के छ भने स्कुल चुज गर्दाखेरि सर्वाङ्गीन विकास जुन स्कुलले दिइरहेछ त्यहाँ बच्चालाई हाल्नु पर्यो मैले भन्न खोजेको होइन अक्षर विद्या मन्दिर सबभन्दा राम्रो हो आज बच्चाहरूको सबै कुरा हेरेर एउटा राम्रो स्कुलको चयन गर्नुहोस् र स्कुल चयन गरेपछि उसलाई 12सम्म त्यहीँ पढाउनुहोस् त्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट राम्रो कुरा तपाईँ भन्नु सही हो किनकि बच्चा साथी प्यारेन्ट्स त्यो साथी पनि छुटाउँछन् हरेक कुरा चाहिँ गतिविधि छुटाउँछन् तर अहिले चाहिँ एउटा पाठ्यक्रमको त्यो लिएर चाहिँ विवाद उत्पन्न भएका छन् यो पुस्तक चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ के भन्छ चेन्ज हुन्छ होइन त्यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ होइन अक्षर विद्या मन्दिर प्रत्येक इयर पुस्तक चेन्ज भएको कुरामा जहिले पनि एगेन्स्ट रहेको छ हाम्रो अक्षर विद्या मन्दिरको पोलिसी के छ भने हामी युनिफर्म चेन्ज जस्तो आज 11 साल भइसक्यो अक्षर विद्या मन्दिरको युनिफर्म चेन्ज भएको छैन बुक्सको कुरा गर्दाखेरि हामी 3 सालभन्दा पहिला बुक चेन्ज गर्दैनौँ 3 सालमा पनि चेन्ज गर्दाखेरि पुरै नचेन्ज गरेर जुन रिभाइज या नयाँ केही आएको छ त्यो मात्रै चेन्ज गर्छौँ त्यो कारण प्रत्येक साल बुक चेन्ज गर्न आई नेवर एडवाइज कि वी शुड चेंज बुक एवरी ईयर। धेरै धेरै धन्यवाद। स्कूल सब में आप देख रहल छी जे डांस प्रति के म्यूजियम प्रति के जे छै से ओहो में रुचि बच्चा सबके बढ़ाओल जा रहल छै। तहिना हमरा सबके बीच में एकटा बच्चा छथि विद्यार्थी, उनका संगे बातचीत करबै नेपालीये में। के नाम छ बाबू? अभिनीत कामत। कतिमा पढिरहेको? 5 क्लास क्लासमा पढिराख्नु भएको छ। तपाईले सबैभन्दा के रुचाउने, के गर्न राम्रो लाग्छ? गाना गाउनु र किबोर्ड हार्मोनियम बजाउनु चाहिँ सबैलाई राम्रो लाग्छ। किबोर्ड पनि बजाउन मन लाग्छ, गाना पनि गाउन मन लाग्छ। एउटा राम्रो गाना सुनाइदिनु त। सोचिराख्नु भएको छ कि क्या? मिलाइराख्नु भएको छ। हामी उहाँसँग उनका सँगै हम सब गीत सुनबै। आईटी के हम जे गर्भ में रखें सीता के, जनक जटा छतहार चलौने धरती पर सीता के। धरती सा सटल जना वही धरती सा सटल जना छुट्टी और मधु याची हमारे जनकपुर ई सीता के जनकपुर। जनक के गाँव जनकपुर हम छी हमर जनकपुर, हमर जनकपुर ई सीता के जनकपुर। बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहबन जे एहिठाम अपने सब देखनौ जे अपना मिथिला के उजागर करैत स्कूल में अहाँ के इंग्लिश प्राय अखन बाजल जाय छै, नेपाली में बाजल जाय छै, लेकिन एहि स्कूल में हमरा एकटा चीज बहुत निक लागल जे अपना सबके जनकपुर के गीत जे ई जनकपुर या छै हमर जनकपुर, जे गंगा सागर के गंगा घाट पर जखन आरती के समय में बजैत रहैत अछि। एहिठाम देख सकै छी जे एहिठाम
बजा रहल छथिन, ओहिठाम जे हारमोनियम बाजि रहल अछि, ओहिठाम तबला बाजि रहल छै। जिनका जाहिमे अपन रुचि छै आइ ओ चीज अपन जे छै से कला देखाबऽके प्रयास भऽ रहल छै। तैँ हम सब अभिभावक सब बातचीत केलहुँ एहि इसकुलके जे पदाधिकारी व्यक्ति छै हुनका सबसँ बातचीत केलहुँ आ जे इंजीनियर सबके किछु बजाओल गेल छै ड्रोन उड़ेबाक लेल, जेना अखन अपने सबके सामनेमे देखेलहुँ जे एकटा अलग अलग तरीकासँ जे छै से विद्यार्थी सबके अखन सिखायल जाइ छै। हुनका सबके जे कहै छै पठन पाठनके सङ्गे सङ्गे जे बाहरी क्रियाकलाप एकदम जिनका जाहिमे इंट्रेस्ट छै, कतेक डांसमे इंट्रेस्ट छै, कतेक म्यूजियम अहाँके म्यूजिक सीखऽमे इंट्रेस्ट छै, कतेक अहाँके जे छै से अपना हाथसँ पेंटिंग करऽमे रुचबै छथिन। सबके अपन अपन एकटा जे छै से भीतरसँ जिनका जाहिमे इंट्रेस्ट छै बच्चाके ओहिमे बच्चा सबके जे छै सिखायल जाइ छै। एहिठाम अपना हाथसँ बच्चा सब जे छै से घरसँ सेहो तैयारी लाइव कऽ लायल गेल छै, प्रदर्शनी छलै आ एहिठाम एकदम जे छै से अखन बच्चा सबके शिक्षा क्षेत्रमे ध्यान देनाइ अति आवश्यक जरूरी सेहो छै। आ हमसब एहिठामके अपने सबके दृश्य देखेलहुँ। अहिना आबऽवला दिनमे जे छै से अहिना इसकुल सबमे जे छै से अहिना गतिविधि नीक नीक नया सब किछु ने किछु सब आबे आ बच्चा सब प्रति जे छै से सिखाबाक जे छै से हुनका सबके ध्यान देबाक चाही। अखन हमसब विदा लेब। नमस्कार।